Namaste, everybody. Dr. Vimal, now Mr. Nair, and other doctors who are participating in this meeting. It is quite nice to talk to you once again. Previous sessions we had Grada Kalpanas, Aristas, and Asavas. I think it was useful for you people practitioners. So today we will be talking about Avaleha Kalpana, especially that Avalehas which are widely used in the Swasahara, respiratory tract disorders. Before starting the session, I would like to tell all of you doctors 2-3 points. See, Swasahara, rhinitis, upper and lower respiratory disorders are so many diseases are there. All are included according to Ayurveda in Swasahara, and few things are coming in the Rajakshma Chikitsa also. So I request all the doctors to first already read the classical text, Swasahara and Rajakshma. Then read some modern medical books, especially the Harrison's or Davidson's chapter of respiratory tract disorders. And understand that one. After learning that one, again go back to the classical text, and you can get a good bridging correlation between the classical and the modern medical textual things, siddhantas, theories. So that will improve your knowledge regarding the whole respiratory tract disorders. So with this few introduction point, I directly jump into my task. Shall I share the slides? Yes, sir, you may. So now you are able to see the slides now. That's okay. Yes, sir, it's clear. Okay. So my humble pranams to our founder, P.S. Warrior, Lord Vishwambara, P.M. Warrior Sir, P.Madhav Warrior Sir, and our Guru, Padma Bhushan, Dr. P.K. Warrior, who has given taught us so many things, especially the practical Ayurveda, what we seniors are all learned from this great Guru, Padma Bhushan, Dr. P.K. Warrior Sir. And his views regarding so many respiratory tract disorders, I will give you whenever, wherever it is required. So if you go through the Avaleha Kalpanas of the Swasahara diseases, there are so many. The northern part of India, the Avalehas used are different, and southern part, we, especially in Kerala, whatever Avalehas used are different. So among them, a few selected items I will tell. The first of all, this is the Agastya Rasayana. Screen is very clear, no? You are able to read it, no? Read, no? Yes, sir, it is. So Agastya Rasayana, it is mentioned in Ashtanga Hridaya and Charaka Samhita. The main ingredients of the Agastya Rasayana is Dasamoola Kashaya, Atmagupta, and so many other drugs. Nearly 22 drugs are there. And Kashaya of Yava also used, and Kashaya of Abhaya also used. And there is a Churna, Praksheva Churnas are Pipali and Abhaya. And we have to add Guda, Taila, Gruda, and Madhu. All are prepared into the Avaleha form, and we are using it. You can see the picture, that is the bottle, packed bottle available in the market, Kotakala Ayurveda Shala. So if you go through the Phalashruti of this Agastya Rasayana, it is mentioned that all the 5 types of kasas, and Kshaya, Shwasa, Hidhama, Vishamajvara, Meha, Gunma, Grahani, Arshas, and Hridroga, Aruji, Peenasa, Valipalidahara, and it improves the Varnam, Ayu, and Bala. So it is a Rasayana. It is not just Avaleha.
Please understand, Rasayana is different, Avaleha is different. Rasayana which we can use continuously prolonged for a longer period to get the permanent result. Most of the Avalehas we are using in acute cases. Chronic cases we have to use the Rasayanas because the deeper all the dhatu changes are required. So longer use of Agastya Rasayana gives you all these types of Phalashuddhi. So in practical, most of you might have used in Swasa and Kasa and everything. You see, there is another yoga, Haridrakhanda Rasayana also with the same result, which contains Agastya Rasayana and added Kasturi and Murgamada and Karpur. That is the only speciality of that Agastya Haridrakhanda Rasayana. Same result. So in practice, all type of respiratory tract disorders, let it be upper or lower, all type of respiratory tract disorders, we can use this yoga. Definitely you will get, it is an assured result giving yoga in rhinitis, asthma, bronchitis, and the present day post the dengue cases cough and post corona cases cough, all these type of related respiratory disorders, we are getting good result by proper use of this rasayana. Let it be either 5 gram to 10 gram in the morning and evening or at bedtime. According to the condition, you can decide. You see, it is mentioned that Megha also, diabetes also, you can give. Some of the diabetic patients develop, maybe due to the season or poor immunity, they develop the cough. So, which is the drug of choice, which will not increase the blood sugar level? It's very difficult to decide. So, among such confusion, the Agastya Rasayana is the best drug of choice. Definitely, it is not going to increase your sugar level. I have seen in so many cases. Agastya Rasayana definitely you can use. It will not increase the sugar in that one. So, type 2 diabetes you can very well use. And COPD type of core pulmonary disease, pulmonary hypertension. Oh, one patient came with so many cough and he's diagnosed with the pulmonary hypertension. In that condition, I tried this one and it is reported in the medical report that pulmonary hypertension reduced by use of Agastya Rasayana. Some of the cases of the cystic fibrosis, ILD, which modern medicine do not have any treatment. You see, in respiratory tract disorder, what is the line of treatment in modern medicine? So they will start with the anti-allergic medicine, antibiotics they use, and mucolytic, bronchodilators, inhalers, and ultimately they end up with the steroid use, which is harmful in the future life. But we have got so many such medicine which will not create any such harmful effect. And moreover, Agastya Rasayana, Haridrakhanda Leha, and the next yoga, Vasishtha Rasayana, all are Rasayana. It will not lead to any additional complications. And you have to see that Hridroga, pulmonary hypertension, by experience I am telling, Hridroga, Acharya has clearly mentioned. Which type of Hridroga he doesn't know. Acharya is unable to say. But in some cases of Hridroga, it is effective. Aruchi pains are already I told you. Vali Palidahara. Have you ever got this result of Vali Palidahara? It is a Tochya yoga. That is why the Vali Palidahara property is there. The total effect, totality of that yoga gives you this Tochya effect that improves the texture and health of the skin, by which you achieve the Vali Palidahara property and improves the color of the skin, improves the ayus and bala. Okay. And in practice, we add so many other medicines also along with the Agastya Rasayana. You can add Vyaghryadi Leha with the Agastya Rasayana for a better result. Vyaghryadi Leha, which I am going to talk to you. Vyaghryadi Leha or Sitopatradi Churna also, or Talisapatradi Churna also you can add. And
Haridrakhanda and Agastya Rasayana is a best anti-allergic property combination. Haridrakhanda and Agastya Rasayana. The frequent use, बार-बार use करने के लिए अगस्त्य रसायन के साथ दशमूल रसायन यूज करो, दोनों मिला के यूज करो. अगस्त्य रसायनम प्लस दशमूल रसायनम इक्वल क्वांटिटी में मिला के एक एक चम्मच खांसी आते तक एक एक चम्मच चूसने के लिए, बार बार चूसने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं. वैसे अगस्त्य रसायन के साथ मृद्विकादि लेह मिला के बार बार चूसते आपका खांसी बहुत अच्छे कंट्रोल है. ये बच्चों को भी दे सकते हैं, खाली अडल्ट लोगों को नहीं, बच्चों को भी दे सकते हैं. उन लोगों का एलर्जी रिलेटेड अस्थमा है, कफ है, राइनाइटिस है, वो सब कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं. डोज थोड़ा कम कर देना. और वैसे हमारा गुरुजी ने एक प्रिस्क्रिप्शन में एक वन बेबी के अडल्ट मैन केम विद chronic sinusitis, phlegm, yellow colored phlegm continuously oozing from the nose. So many treatment he did, including Ayurveda also. Our Guruji, Dr. P.K. Warrior sir, recommended, please note, Agastya Rasayanam, Gulgulu Tiktaka Grudam, and honey, all the three together. Agastya Rasayanam, Gulgulu Tiktakam, and Madhu के साथ रात को खाने के लिए उसको दिया. Within 2 to 3 weeks, he found excellent result. Excellent result. After 1 month, he came that 50% of the complaints are reduced. Of course, there was diet pathyam and apathyam, everything he followed. But you see, since a long period, this candidate was suffering from the chronic sinusitis with the nasal ulcers and everything. No antibiotics, no steroid was working. So such type of condition also Agastya Rasayana gives you super result, super result. So Haridrakhanda, I don't have to explain to you repeatedly. And next yoga is Vasishtha Rasayana. In the Vagpada Ashtanga Hridaya, after mentioning about the Agastya Rasayana, he directly comes to the Vasishtha Rasayana. It contains the Kashaya, Dasamoola, etc. 45 drugs are there. And there is Balladaga also in it. And Swarasa of Amalaki, Good, and Taila, Gruda, and Madhu. And for the Churna, Pipali and Trajada is being added. See, there is Balladaga in it, and there is Swarasa of Amalaki. And Acharya says, it is superior to the Agastya Rasayana. And you don't have to follow any major pathya or anything. Useful in all the season. All this, irrespective of the season, you can use. Such is the result. But very few doctors only write this yoga. According to our experience, cortical experience, Vasishtha Rasayana is definitely superior. See, have you remember any yoga with the Amalaki Swarasa in that one? Hardly few Avalehas are prepared with the Swara, adding a Swarasa. इसमें जो आमलकी का स्वरस है, आमलकी का रसायन प्रॉपर्टी बहुत है, आपको मालूम है. और रक्तपित्त शमन है, प्रमेहहरम, वृश्यम, रसायनम, all these properties are attributed to the आमलकी. So the रसायन प्रॉपर्टी जो बोला है अगस्त्य रसायन में, वासिष्ठ रसायन में ज्यादा है. भल्लादक होने के वास्ते जिन कंडीशन में बहुत क्रॉनिक है, इनक्यूरेबल कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चाहिए, वो कंडीशन में आपको वशिष्ठ रसायन दे सकते. अगस्त्य रसायन के जैसा तालिसपत्रादि, सीतोपलादि और व्याघ्रादि मिलाओ, कोई बात नहीं. And you can add दशमूल रसायन और मृद्विकादि सब में मिलाओ. This yoga also will not increase the sugar level. Both अच्छे हैं. In this context, I would like to recollect a recent talk by one of our official that we had Dr. Vaidyavani, MS Vaidyavani. I think you people remember very well. He was a great cardiologist, cardiac surgeon also. He only
invented the Indian-made heart valve in Trivandrum, Chitira, Sri Chitara Tirunal Hospital. He only invented that Indian-made cardiac valve. So Adi Vaidyashala was associated with him so many years. He has written 3 books: Legacy of Vagbada, Legacy of Charka, Legacy of Susuda. After studying the 3 Brihatrayas, he has written in English. If possible, kindly you can go through the text also. So, according to his instruction, we did Amalki Rasayana research. Amalki Rasayana research fly में किया है. A fly having 40 days of lives, only 40 days. उनको शुरू में ही आमलकी रसायन स्टार्टिंग में दिया. उसका एजिंग जो है ना, एजिंग फैक्टर है, वो मेडिकली वो लोग करेक्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिसर्च टेस्ट कर सकते हैं. एजिंग जो है ना वो कम ही हो गया, उसका जॉइंट्स एंड अदर बॉडी पार्ट डीजनरेशन कम हो गया, उसका इम्यूनिटी भी बढ़ गया. मतलब उसका 40 डेज का लाइफ जो है ना, compared to the other group, it was much better. Maybe due to the Amalaki, it is due to the Amalaki effect. So our Rasayana property is well established. वैसे तो दूसरा एक योग है ब्रह्म रसायन. ब्रह्म रसायन भी ऐसा मणिपाल यूनिवर्सिटी में भी हमने रिसर्च किया है with same result. Immunity improved, aging reduced, degeneration reduced. So all these are indicating what our Rasayana Avalehas, Lehas are excellent. Anybody can take it to the lab and do the research. Excellent result. So this is regarding the Vasishtha Rasayana. Try to use this Vasishtha Rasayana for a better result. Better result, you will definitely get it. So that's all regarding the Vasishtha Rasayana. And the next is the wonderful drug Swasahara Leha. Anybody heard about this Leha? I don't know. Kottakkal Ayurveda is only preparing this yoga. It is our own combination. Our seniors with a lot of clinical observation prepared this and tried and found to be very, very, very effective. See, Kashaya is with the Dasamoola, Jiraga, Nagara. 3 drugs, 8 parts, Dasamoola, Jiraga, 6, Nagara 2. Anybody remember which is this yoga? Bala, Najiraga, Nagara. Nayopayam Kashayam. One Kashayam is there with Kottakkal Ayurveda. Nayopaya Ayanamide, Bala, Jiraga, Nagare, Siddhakwado Madun Mishra, Swasa Hidmahara Para. Swasa Hidmahara Kada Quad hai. उसमें the same Dasamoola Jiraga. So Swasahara Leha का base जो है ना, वो नयोपायम कषायम के योग है. और उसमें क्राल तिक्ता, त्रिजादा, जीरकत्रया, त्रिकटु, दिक्षारा, etc. 40 drugs powder प्रक्षेप द्रव्य है. और please see that the bhasmas of Kanta Bhasmam, Manokva Bhasmam, Hingula Bhasmam, Tangana Bhasmam, Yashada Bhasmam, Anjana Bhasmam, all are added with this Leha. So such a strong medicine, and at last we are adding Sita also into that one. See the Balastudi, Swasa, Kasa, Hidma, Shula, Agnimandya, Raja Ekshma, Raktapitta, Chardi, Vruddhi, Gudma, and Kridroga, Vadanulomanam, and Kaphoparodhara. It reduces the Kaphoparodha. Kapha Uparodha. That is the main thing happens in the Tamaka Swasa and Kaphoparuddhagamano Pavano Vishwagartida. Kaphoparuddhagamana Pavanaha. So Kaphoparodha reduced by this yoga. So in clinical experience, what we also see that it is again superior to the Vasishtha Rasayana and Agastya Rasayana because of the presence of so many other drugs, including bhasmas in that one. It is effective, sir. It is very, very effective. I have to tell you 2-3 experience of the Swasahara Leha. One patient
one patient's family members came to me and told that their father, aged 70 years old, suffering from high diabetes, hypertension, and stroke, is there in the ICU of an office of a hospital. So he acquired pneumonia in the ICU, hospital pneumonia. So the doctors tried, pulmonologists and other doctors tried so many medicine. He was not responding to any of the medicine for the pneumonia. So after 1 week, 10 days, the doctor told the family members that he is not responding to any medicine, allopathy medicine for pneumonia, unless and until we cannot do anything. You do one thing, you go and meet some doctors there in Kottakkal and get some medicine and give. And how they will give, he told that I will tell the ICU nurses to help you through the nasal draw and tube, you can very well give. The patient's family came to me and told all this story. I told them, no, I will not give any medicine because the patient is there in the ICU. How can I give medicine? The patient is there in the house, your house I will give, otherwise I will not give. If something goes wrong, I will be responsible. My institution name will be tarnished. I told, no, I will not give any medicine. So already these family members are known to me and they did a lot of argument with me. At last, they agreed that your name will not be disclosed anywhere. Your institution name also will not be listed. You just give us the medicine. We will try our level best to give to the patient. So at last, with a lot of tension, anxiety and everything, I wrote the medicine. What I wrote, Vyaghryadi Kashayam with Gandhakam capsule, morning and twice in a day, and Swasahara Leha 3 times, 4 times in a day. Vyaghryadi Kashayam, I think any of you know, I don't know. Ela Kana Madhuga Nagara Gabda Vasa Nimbamrada Ambu Dasamoola Kashaya. That is Vyaghryadi Kashaya. It is very good medicine. Kashaya Kalpana, Kvadha Kalpana, I will tell you. And with the Gandhaka Basman capsule. And again, this Swasahara Leha 4 times. So they mix it with the water and through the nasal tube they introduce and the nurses will help them. You won't believe that after 10 days, the patient's family members came back to me and told that there is excellent reduction in the symptoms and the doctors are very, very happy. You see, such is the chronic conditions and emergency situation. Our medicines are also giving good result. Don't forget, this is like that. This is the best medicine. Another clinical history I should say. Again, a 75-year-old man, grandfather with the diabetes, hypertension, and chronic smoking and alcohol. Chronic smoking and alcohol. He was suffering from severe cough, productive cough. So they showed all the doctors here and there. And at last they diagnosed that it's a rare case diagnosis. The inferior vena cava were joining the heart, no? The inferior vena cava joining the heart. There is a tumor type of growth is there. That is the reason for the cough. They don't have any medicine. If at all, risky surgery can be carried out. So the patient came, family members came. I told them, I am seeing for the first time all these type of cases. I cannot treat. They told that, anyhow, this is a case I am going to die. You please give your medication. Yeah, हमारे में हो जाएगी recording है. And I gave Vyaghryadi Kashayam again with the Gandhakam and Swasahara Leha. He was highly diabetic. You won't believe that after 20 days, the patient came that his cough reduced to 50% reduced. And his sugar did not increase. Blood sugar did not increase at all. This patient continued this same combination for 3 to 4 months and absolutely free from cough. So such is the result of our medications. Please note this yoga also, it's very effective, especially in cold places, northern part of India where there is severe cough, cold and rhinitis, which is not responding to the modern medication.
You can very well start this yoga, these type of yogas. And in advanced case of respiratory CA, this yoga is very effective. And sarcoidosis type of cases and post-COVID chronic cough also we can add. You can also mix it with the Vasishtha Rasayana or Dasamoola Rasayana. All these combinations are very, very effective. Kusmanda Rasayana. I think most of you are very well informed about the Kusmanda Rasayana. It contains Kusmandam and Churna, Tippali, Nagara, Jiraga, Trijada, Thanyaga, and Maricha, and Gruda, Ghanda, and Madhu. The Phalashruti, it is told Kasaharam, Idhmaharam, Jwaraharam, Swasaharam, Rakta Pittaharam, Kshatakshaya Haram, and Urasandhana Jananam, Medha Smriti Balapradam. Medha Smriti Balapradam. It is one of the best medicine. We see that this is a Brahmana Rasayana. All the previous Agastya, Vasishtha are not that much Brahmana. This is a Brahmana Rasayana. That is the difference between the previous two and this one, Brahmana Rasayana. And if you see the quality, Guna Bhalasudi, Guna, Rasaguna Vidya Vibaga, Kusmanda, Benin Kasa is the modern medical name. And no Kasa mentioning about the Kasa, Swasa, or anything in the Bhalasudi. How they made these combinations, very wonderful. And in the pediatric cases, children, to improve the immunity against the respiratory tract disease, this is one of the best combination. And bleeding also, nasopharyngeal bleeding, throat bleeding, or bronchitis with hematomesis, blood vomiting, or blood spot in the mucus. All these type of condition, this is very, very effective. And alcoholic patients, chronic alcoholic patients, they'll develop some sort of refluxes and esophageal varices rupture out. जो एयर पाइप में जो है और फुट पाइप में जो वायरसेस है, कफ की वास्ते ब्लीडिंग हो रहा है, रप्चर होकर के ब्लीडिंग हो रहा, ब्लड वॉमिटिंग या ब्लड स्पिटिंग होता है, उन लोगों को भी ये कुष्मांड रसायन बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं. And throat laryngeal ulcers, such condition throat और laryngeal ulcers में प्रवाल भस्म के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट है. और ब्लीडिंग में भी कफ ब्लीडिंग में भी प्रवाल भस्म के साथ ही अच्छा रिजल्ट देते हैं. आप देखिए इसका जो दूसरा फल है मेधा स्मृति बलप्रदम. Anybody tried this yoga in children with improve the medha, smriti and all these things? Not only children, anybody, especially in the ADH group of disease. This is very, very effective. This yoga is very, very effective. ADH type of cases. And hyperactivity children. This is again, hyperactivity is the Vata Prakopjanya Vikar है ना, उसमें भी ब्रह्मण का ऐसा योगों का इफेक्ट बहुत अच्छे है. ADH, hyperactivity syndrome. Oh, Nethasmriti Balapradam, Pathyam Chedo Vigarina. And Urasandhana Janam. वो लंग डिसीज का और दूसरा कोई कारण से स्टमक ब्लीडिंग के वास्ते ब्लीडिंग जो हो रहा है उसमें भी ये अच्छा होने का संभावना है. I not tried in any case, such cases. You can add Indukantam Ghridam along with the Kusmanda Rasayana for a better result. The Indugandha Ghridam is immunity booster. So Indugandha Ghridam with the Kusmanda Rasayana at bedtime is very, very effective. And Dasayana Kusmanda Rasayana with the Karpuradi Churna बार-बार चूसने के लिए बहुत अच्छे हैं. Next, दशमूल रसायन. ये जो दशमूल रसायन है हमारा बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला दवाई है और योगा ग्रंथ है हमारा स्पेशल है, कोटकल का स्पेशल है. उसमें काढ़ा जो है दशमूल, भाषा, सुंडी, देवदारू, जीरगा, धान्यगा,
शुगर है, ये चूर्णा, त्रिकटु, त्रिजाता, जीरगा, जाति फला, जाति पत्री, कुष्ठा एक्सेट्रा 16 ड्रग्स। उसका जो फलश्रुति है वात कफहरम, श्वास कासहरम, पीनसहरम, अरोचकम, अग्निमांद्यम and useful in all udara rogas. See, vata kaphajanya mostly the cough. Any age group, vata kaphajanya hai, श्वास कास and everything. If it is pakka vata kaphajanya, you can very well give एक चम्मच बार बार चूसने के लिए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट चाहिए। एंड प्रोडक्टिव कफ में आप इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं मृद्विगादि लेह। मृद्विगादि लेह आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू, that will give instant relief. मृद्विगादि लेह्यम प्लस दशमूल रसायनम इमीडिएट रिजल्ट देते हैं। और स्पास्मोडिक कफ, कोई स्पास्मोडिक कफ आता है मतलब खाली कफ आता है, उसमें फ्लम कुछ नहीं है, उसमें दशमूल रसायन इफेक्टिव है बार बार चूसने के लिए। और मृद्विगादि लेह्यम और सीतोपलादि के साथ मिला सकते हैं, तलिसपत्रादि के साथ मिला सकते हैं। मतलब इसका प्राणवायु सूत्र, प्राणवायु, उदान वायु एंड समान वायु के संबंध जो विकार है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये जो योग है उदर रोग है, बट इट विल नॉट गिव यू एनी विरेचन प्रॉपर्टी। मतलब आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीज के साथ जो रेस्पिरेटरी बीमारी जो आता है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है या कड़की पेन है, इसके साथ जो खांसी आता है, वो टाइप केस में दशमूल रसायनम विल हेल्प यू फॉर द बोथ कोलन प्रॉब्लम एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। The only thing, do not mix it with the Karpuradi Churna because this is also containing Karpura, Karpuradi Churna also containing Karpura. दोनों मिला के दे दे तो वो हार्ट बीट का प्रॉब्लम होता है, बीपी डाउन हो जाता है, वो ध्यान रखना। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स ऑलरेडी आई टोल्ड यू, एंड जॉइंट्स पेन्स के साथ जो आर्थराइटिस का बीमारी है, जॉइंट्स पेन है, उसमें काशी आ गया, ये दवाई बहुत अच्छे अच्छा है। मृद्विगादि लेह्यम, मृद्विगादि लेह्यम अष्टांग हृदय काश चिकित्सा में रेफरेंस है। उसमें द्राक्षा कषाय है, चूर्ण है, पिपली, केवल पिपली, और इसके साथ शुगर और मधु है। इसका फलश्रुति एक ही बताया, कासारम। अकेला दे सकते हैं और ना तो मिला के भी दे सकते हैं। अकेला देते हो तो स्पेशली प्रोडक्टिव कफ में बहुत अच्छे रिजल्ट है। प्रोडक्टिव कफ में फ्लम ज्यादा आ जाए तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट है। और दशमूल रसायन और पोस्ट एंटीबायोटिक रिलेटेड एनएसआईडी एंटीबायोटिक्स खाने के बाद ये जो कफ आता है, ये मृद्विगादि बहुत अच्छे है। एंड जो खांसी है, फ्लम बाहर नहीं आता, जो फ्लम है अंदर, और खांसी के वास्ते भी और बाहर फ्लम नहीं आता, उसमें भी एक मृद्विगादि लेह्यम बहुत अच्छा रिजल्ट दे है। आप ये ध्यान रखना। दूसरा एक द्राक्षादि अवलेह है हमारा, वो द्राक्षादि अवलेह और ये मृद्विगादि अवलेह दोनों अलग है। मृद्विगादि अवलेह जो है ना, वो खाली खांसी में है। द्राक्षादि अवलेह है वो कामला जॉन्डिस में भी ही रेफरेंस किया है। उसमें अम्ल की रस, द्राक्षा कल्का, पिप्पली, यष्टिमधु, शुंठी, वंशरोजना, मधु के साथ द्राक्षाप्रस्थम, कणाप्रस्थम, वो ही हो गया। मृद्विग अर्धशतम, पिप्पली शतम, वो ये मृद्विगादि, दोनों अलग अलग योग है। मृद्विगादि खांसी के लिए और द्राक्षादि जॉन्डिस कामला के लिए यूज होता है। व्याघ्र्यादि कषाय, व्याघ्र्यादि कषायम अष्टांग हृदय में, व्याघ्र्यादि अवलेह लेहम अष्टांग हृदय में रेफरेंस है। कषाय में व्याघ्री आता है और चूर्ण, अवचूर्ण में व्योषा एक्सेट्रा 13 ड्रग्स आता है। इसके साथ गुड़ा, घृदा, मधु, तैलम नहीं बताया है, गुन्माहरम, हृद्रोगहरम, अर्शोहरम, श्वास कासाहरम। ये व्याघ्री का रेफरेंस जो है ना, अष्टांग चरक में दशेमानी, कासाहर दशेमानी, कंठ्य दशेमानी,
हिक्का निग्रहण दशेमानी, वो सब में व्याघ्री का रेफरेंस आता है। वो कास श्वास ज्वर कफ अनिल पीन संबंधी भाव प्रकाश में बताया है। निदिग्धगा स्वरसम हिंगुलम और मधु श्वासहर का अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब ये व्याघ्र्यादि योग है, बहुत अच्छे है। वो बहुत सारे योगों के साथ भी मिला सकते हैं। ये मैंने जो बताया पहले, सितोपलादि, व्योषादि, तालिसपत्रादि और अगस्त्य रसायनम प्लस व्याघ्र्यादि, श्वासहरम प्लस व्याघ्र्यादि, वो सब मिला के दे दे तो कॉम्बो इफेक्ट दे दे तो रिजल्ट, क्विक रिजल्ट देते हैं। आजकल जो वैसे है बीमारी है, पेशेंट लोग हैं, आप लोगों को इमीडिएट रिजल्ट पूछता है। खाली एक दो मेडिसिन के यूज से ऐसा इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता है। So we have to go for a combination of one or two drugs. That is become a practice nowadays. So आप combination दे दो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलता है। और अनदर थिंग है, व्याघ्र्यादि अवलेह के साथ आषाढ़्यादि गुड़िका मिला के मिलाए तो उसका जो हिकअप जो वगैरह है तो कम हो जाता है। जिन लोगों के फीवर है तो सूर्य प्रभा गुड़िका और वेटुमारन, केरल का हमारा कोटेकल का वेटुमारन गोली मिला के भी दे सकते हैं, और श्वासानंद गोली भी मिला के दे सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। और जब मैंने बताया दशमूल रसायन से पहले एक चीज मैंने भूल गया। हमारा गुरुजी पद्मभूषण डॉक्टर पीके वारियर साहब आईपी केस में जो ट्रीटमेंट पंचकर्म के साथ साथ जिन लोगों को खांसी डेवलप होता है, उन लोगों को इमीडिएट रिजल्ट के लिए दशमूल रसायनम प्लस हिंगुला भस्मम कॉम्बिनेशन देते थे। 100 ग्राम दशमूल रसायन में हिंगुला भस्मम कैप्सूल, 1 कैप्सूल 150 mg, वैसा 10 कैप्सूल्स मिला के अच्छी तरह मिला के बार बार चूसते रहो। यू वॉन्ट बिलीव, आप पूछो मत, इतना अच्छा इमीडिएट तुरंत रिजल्ट मिलता है दशमूल रसायन के साथ हिंगुला भस्म। आईपीडी में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। वी कैन यू गिव इट इन द ओपीडी लेवल आल्सो। So next is the Talisapatradi Leha and Talisapatradi Vatakam. In Talisapatradi Lehiam, Churna, Talisapatra, Vachavika, etc. 10 drugs are coming. Talisapatra Chavika, Marijanam, Palam Balam, Krishna, Tanmula Yordve, Ve, Pale, Shundi, Palatrayam, Chadurjada Mushirancha. That is the yoga. What is the difference between Talisapatradi Leham and Talisapatradi Avaleha? So in Leha, Abhayam Nagarasthane Dadyad Atraiva Vigrahe. While explaining the Talisapatradi Vataka, Acharya says, friends, instead of Nagara and sugar, Nagara, you add Abhaya, Dadyad Atraiva Vigrahe. जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है तो तालिसपत्रादि योग में अभया नागर निकाल के वो प्लेस में अभया हरितकी डालो, आपको तालिसपत्रादि अवलेह मिल जाएगा, उसमें गुड़ भी मिलो, आपका मोशन अच्छा हो जाएगा। That is the difference between the Talisapatradi Vataka and Avaleha. So Kotakal Avaleha contains good and Haritaki. Vataka contains sugar and Nagara. So Vataka creates a little bit of constipation. Avaleha could give you normal motion. That is the difference between the both. And it is Vata slash Maharam, Chardi, Grahani, Parshashula, Hridroga, Jura, Shofa, Pandu Gunma, Panateya, Arishas, Praseka, Pinasa, Swasa, Kasa. मतलब all the upper respiratory and lower respiratory disease में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला योग है। जिन लोगों का गैस्ट्रिक एसिडिटी है ज्यादातर और खांसी भी है, तलिसपत्रादि अवलेहम विद शंख भस्मम या प्रवाल भस्मम मिला के दे दो, एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा, रिफ्लक्स इसोफेगस भी कम हो जाएगा और खांसी भी कम हो जाएगा। वैसे खांसी है जी, which is related to the reflux esophagitis, respiratory cause नहीं है, उन लोगों का लंग्स वगैरह अच्छा है बट खांसी है,
वो पित्त का रिफ्लक्स की वास्ते थ्रोट इरिटेशन और इरिटेशन होता है, उससे वजह से कफ डेवलप होता है। वो सब कंडीशन में तलिसपत्रादि अवलेहम विद शंख भस्मम या प्रवाल भस्म 2 बार या 3 बार आफ्टर फूड, मतलब all GI tract releases, acidosis and all these things. And you can add Vyaghryadi also with the Talisapatradi Avaleha. And another important thing है alcohol related जो upper respiratory tract और lower respiratory tract बीमारी जो होते हैं ना, वो सब कंडीशन में भी ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। अल्कोहलिज्म रिलेटेड, पदार्थ रिलेटेड, पानात्य आचार्य ने बताया है पानात्य। I was doing, but so many this alcohol addict cases, it gives good result in the stomach problem and respiratory tract, upper and lower tract diseases, and maybe effective in the liver cirrhosis also. I cannot say. So you may ask one question, which is the Talisapatradi Churna? Both, all the three are different. Please understand. Talisapatradi Churnam, Talisapatram, Harija, Nagaram, Pippali, Tukki, Ela, Shubha. And it is added with the sugar. That is the Talisapatradi Yoga, Churna Yoga. Talisapatradi Vadakam and Leha, different this thing. In Talisapatradi Vadakam and Avaleha, Chavika, Krishnamula, Lavanga, Nagapushpa, Ushira are more than this Talisapatradi Churna. Chavika, Krishnamula, Lavanga, Nagakusma, Ushiras are more in Talisapatradi, Avaleha, and Vadaka. So, Talisapatra Churnam, you can use in various types of causes, especially for children and everything. मधु के साथ बार-बार मिला के दे दो, बहुत अच्छे रिजल्ट है। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, बहुत माइल्ड है। So it improves the taste of the mouth, दीपन पाचन है, और कासा श्वास है, छर्दी। बच्चों को भी कासा श्वास होने के वास्ते और कफ होने के वास्ते बार-बार छर्दी होता है। लोगों को ये मधु के साथ बार-बार लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। पांडु ज्वरा, मूठवात अनिलोमनम, द लास्ट फाइंडिंग, मूठवात अनिलोमनम। जिन लोगों को गैस्ट्रिक उदावृत या गुन्म की तरफ सिम्टम्स दिखाई जाते हैं, लोगों को दे सकते हैं, बट ओनली थिंग शुगर है, डायबिटीज वालों को नहीं दे सकते। ओनली डायबिटीज वालों को नहीं देना, शुगर थोड़ा बढ़ जाएगा। सो जिन लोगों को गैस्ट्रिक रिलीज, पूरा गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, मूठवात अनिलोमनम, उसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट इज द हरिद्राखंड। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, वैशजरदावली का रेफरेंस है, उसमें घृतभ्रष्ट हरिद्रा यूज करते हैं, और चूर्ण, त्रिकटु, त्रिजादा, विडंगा, त्रिवृत्र, त्रिफला, नागकेसरा, and musta and loha basma, and khanda also added. So it is a Vataka type preparation which we are doing, not Avaleha. It is a Vataka type preparation Kottakkal is manufacturing. It is one of the best medicine for allergic type of respiratory diseases. You see the Phalashruti, आप लोगों को मालूम है, फलश्रुति में कंडू, विस्फोड़ा, दद्रु, शीतपित्ता, उदर्दा, कोढ़ा, वही बताया। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर के बारे में कुछ रेफरेंस फलश्रुति में नहीं है, बट हमारा जो प्रैक्टिस में, आपका भी प्रैक्टिस में आपको शायद देखा होगा, ये हरिद्राखंड जो कुछ भी एलर्जिक रिलेटेड, जिन लोगों को इस्नोफिल्स का काउंट ज्यादा है, एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट को ज्यादा है, उसकी वजह से जो कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बीमारी है, उसमें ये अच्छा रिजल्ट दे है। खाली नहीं, वो स्किन में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। सो इट इज यूजफुल इन बोथ स्किन डिसीजेस एज वेल एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीजेस। कुर्कुमा लौंगा, मतलब हरिद्रा के बारे में आप फलश्रुति देखो, धन्वंतरि निघंटु वाले वर्ण्य, तुग्धोषहरा, पांडु, व्रणहरा, महाप्रकाश ने प्रियनस आरुचि नाशिनी, धन्वंतरि निघंटु। So reference is very clear. That's why in so many institutions, especially Jamnagar and Banaras, लोगों ने बहुत अच्छे रिसर्च किया है, PMD में PhD किया है, eosinophils का काउंट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। So घृतभ्रष्ट हरिद्रा you have to use,
other Vridapishta Haridra you have to use. Then only you will get better result. So with Agastya Rasayana or with the Vasishtha Rasayana, you can add Vyaghryadi Leha. So if you come to the management of the खांसी, diabetes वालों को खांसी manage करने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास जो दवाई है सब मोस्टली अगस्त्य रसायन, वासिष्ठ रसायन, वो सब ओके। दूसरा कुछ बार बार चूसने के लिए दूसरा कॉम्बिनेशन सोचे तो हमारे पास बहुत कमी है। सो वो सब केस में हरिद्राखंडम और व्योषादि वडगम मिला के दे दो। व्योषादि वडगम ले लेते भी आपको इतना शुगर ज्यादा नहीं बढ़ जाता है। सो हरिद्राखंडम और व्योषादि वडगम मिला के देते तो डायबिटीज वालों जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज आता है, खांसी आता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। So please try all these combinations. So Haridrakhanda, see this is Virechana also, because Trivurt Trifala is there. It is very good Virechana. Trivurt and Trifala is there. And you see that it improves the body texture. Skin का जो texture है, color है, appearance है, बहुत अच्छे improve हो जाता है। किस वजह से? You see there is लोहा भस्मा in it. So पांडुरोग की वो सब लोहा भस्मा is there, इसलिए त्वचम भी है। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं सर। So Haridra Mridwikadi Leha, this is almost similar to Haridrakhanda. I contain Draksha Kashayam and powder में चूर्ण में Haridra, Maricha, Rasna, Pipali and Shati, and there is Taila and Guda, Swasahara Leha. No other indications I can say. If you mix Haridrakhanda and Haridra Mridwikadi Leha, it is very, very effective. And coming to the Vyoshadi Vadagam, I think all of you are very well familiar with this yoga. Vyosha, Talisapatradi Churna, Tindrani, Amlavedasa, Chitraga, Jiraga, Ela, Lavanga, and it is prepared in the Guda. And in Falashruti says, very good in Penasa and Swasa and Daruchi. There is no doubt, no combination. What a granules, Vataga is there to be competitive with the Vataga, Vyosha the Vataga. इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपको कैरी करने में भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे मुंह में डालो, बार बार चूसते रहो, और वरना तो दूसरा अवलेह को साथ मिला के दे दो, अगस्त्य रसायन, व्याघ्र्यादि, दशमूल रसायन, ये सब कॉम्बिनेशन अच्छा है। जो आजकल जो कोल्ड आता है, मतलब कोरिजा या इन्फ्लुएंजा आता है, वो वायरस की वजह से, ये सब नासल इन्फ्लामेशन है, नेशनल कंटिन्यूअस डिस्चार्ज है, कंटेजियस भी है, घर पे आ जाए तो पूरा फैमिली मेंबर्स को जो आता है। सो ये सीजन शुरू करने से पहले सब लोग व्योषादि वडगम शुरू करो, किसी को पकड़ते नहीं, पकड़ते भी इंटेंसिटी बहुत कम जो हो जाता है। सोर थ्रोट है, एलर्जिक साइनसाइटिस है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। एक दूसरा रिजल्ट है, इसे देखो, अरुचि। ये बात खाने की वजह से आपका खाने का इच्छा, मन बढ़ जाता है। बुखार और खांसी, श्वास कास, इसके वजह से हमारा अग्नि डाउन हो जाता है, खाने का इच्छा नहीं होता। उन लोगों को भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। दूसरा एक हमारा एक्सपीरियंस का रिजल्ट है, आप देखो इसमें तुंद्रनी और अम्लवेदस, दो अम्ल रस प्रधान द्रव्य है। इसकी वजह से लिवर मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करते हैं, मतलब लिपिड प्रोफाइल और बिलिरुबिन का वो सब लिवर मेटाबॉलिज्म रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये करेक्ट करते हैं। हमने देखा है, क्लिनिकल रिपोर्ट में देखा है। और फैटी लिवर चेंज को भी बहुत अच्छे है। कोलेस्ट्रॉल करेक्शन अच्छा है। कई लोगों को लिवर सिरोसिस या लिवर फाइब्रोसिस में भी थोड़ा रिजल्ट हमने देखा है। छोटा छोटा गॉल ब्लैडर शोल्डर पत्थर है, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। उसमें आप कल्याणक क्षार के साथ मिला के दे दो। छोटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग गॉल स्टोन्स, छोटा छोटा पत्थर है, उसमें कल्याण क्षार के साथ व्योषादि वडगम दे सकते हैं। और लिपिड प्रोफाइल का बहुत अच्छा रिजल्ट है विद लिपिड प्रोफाइल करेक्शन। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, एलडीएल का सब मामला है, तो
बार बार यूज करो, और वरना तो 3 times in a day आफ्टर फूड यूज करो। 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट जो मिलता है बहुत अच्छे, दैट इज बिकॉज ऑफ द तिंद्रणी एंड अम्लवेद। सितोपलादि आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे फिमिलियर है। सितोपला, वंशरोचना, पिप्पली, एला, त्वक विथ हनी और घृत, same in this kasa swashaharam, chayharam, and it improves the agni, parsha shulaharam, joraharam, urdhvanga rakta pittaharam. See, in rakta pitta you can add it with the Dasamoola Rasayana। Dasamoola Rasayana के साथ मिलाओ, वरना तो खाली मधु और घृत के साथ मिला के बार बार चूते रहो, और टू सर्टेन एक्सटेंट रक्त ऊर्ध्व का रक्त पित्ता कंट्रोल हो जाता है। बच्चों को आधा चम्मच बहुत बार फ्रीक्वेंट यूज बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यू कैन ऐड सितोपलादि चूर्णम विद रजन्यादि चूर्णम व्हिच इज आल्सो इंडिकेटेड इन द बाल रोग, इट बी टेकन एट बेड टाइम, बहुत अच्छे रिजल्ट है रजन्यादि। अब देखो, हस्तपाद दाह, सुप्त जिह्वा, जो 2 प्रॉपर्टी है, I don't understand what is, I have not tried, I got any experience in this astapada daham, that is the burning sensation of the heart and feet, hand and feet. Supta jikhva, numbness of the tongue, which may be due to the weakness of the hypoglossal nerves. These are the 2 points which we have to see thoroughly. And in stroke also we get this supta jikhva symptom. Whether we can try that in the Sutopaladi can be tried in Supta Jikva of the stroke originator, we have to try. So friends, please try this Palashruti in various conditions. Otherwise, it is very good yoga for the Kasa Shwasa, there is no doubt. And we have 2 more products called Karpuradi Churna, that is Brihat Karpuradi and Lakhu Karpuradi, because it is Swasahara, I am telling. Karpura, Devadaru, Shati, etc. 26 drugs are there. And we add Sita and Kasturi, Kasa Swasaharam, Rochakaharam, Agnimadhyaharam, Rudrogam, Vidma, Chardi, Shulaharam, and again it is just like Talisapatradi Churnam, Vatani Lomanam. And Karpuradi Lekhu also is there. Karpura, Ela, Takkola, Jatifala, Jatipatri, and Lavanga, etc. drugs with the Sita. And it is also Hridyam and Rochanam, Kshayam, Kasa, Swasa, Haram. So that's all regarding the yogas discussion. So there are so many yogas which we can very well use without any problem. So select according to the condition, according to the age and patient. Go for combinations. And the only thing in diabetic patients, see that which contains high sugar level or which containing Sita, please do not use. And Jaggery, not much problem. So such condition, Agastya Rasayana, this Vasishtha Rasayana, Haridrakhanda Leha, etc. is very effective. And Vyaghryadi Haridrakhanda, such medicines you can tell it. And all other respiratory tract diseases, let it be any origin. There are so many respiratory conditions, ILD, fibrosis, so many type of conditions. Nowadays, the diseases are more and more after the corona. So don't worry, we can very well try. And we in our places, Kerala and all, we give kada, Dasamoola kada, Vyaghryadi Leha, Ela Kanadi Kashayam, etc. with Tumaranya, Swasanandam, Mrityunjaya, Surya Prabha, all these and we give this Agastya Rasayana type of Avaleha also, which give instant, within 1 week you get good result. So try to use all these combinations.